बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज डिफरेंट कंपेयर टू एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बायोलॉजी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज है बायोलॉजी 9th क्लास उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो एंजाइम से रिलेटेड है। द केमिकल विच आर इन्वॉल्व्ड एज कैटलिस्ट इनसाइड द लिविंग बॉडीज आर। लिविंग बॉडीज में जो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और स्टार्च हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रोटीन्स है, क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर एंजाइम्स है और एंजाइम्स की जो नेचर होती है वो प्रोटीन in नेचर होती है, तो बेस्ट आंसर इज द प्रोटीन। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिसका काम क्या है? allow new chemical reactions to occur. Option number B, are used up during chemical reactions. Option number C, alter the direction of chemical reaction. Option number D, alter the rate of chemical reaction. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर एंजाइम होगा तो जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, अगर एंजाइम नहीं होगा तो स्पीड कम होगी। क्वेश्चन नंबर 3 is the graph below shows that the rate of an enzyme catalyzed reaction its rate is। अब इस ग्राफ में हमें एंजाइम और टेम्परेचर का रिलेशन बताया हुआ है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जो एंजाइम का जो रेट है वो ज्यादा होगा। तो इसका बेस्ट आंसर है इंक्रीज विद टेम्परेचर अप टू मैक्सिमम 40 डिग्री। व्हाट इज ट्रू अबाउट एंजाइम? एंजाइम के लिए क्या ठीक है इसमें से? इनमें से ऑल पार्ट्स ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रिएक्शन, enzymes lower the activation energy of reaction, an enzyme can act upon any kind of substrate they are need in large quantities। तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। Question number 5 is what is true about the cofactor? Cofactor के लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? टेक पार्ट इन रिएक्शन, हेल्प इन एंजाइम्स इन देयर एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज एक्टिविटी इंक्रीज एक्टिवेशन रिएक्शन आर कंपोज ऑफ प्रोटीन्स। तो कोफैक्टर्स हेल्प एंजाइम इन देयर एक्टिविटी, क्योंकि ये कोफैक्टर जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये जो एक अनदर पार्ट होता है एंजाइम के साथ, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। वन ऑफ द फॉलोइंग में फंक्शन एज कोएंजाइम फॉर एंजाइम। तो एंजाइम के लिए एंजाइम के लिए जो कोएंजाइम है उन वो ज्यादातर क्या होते हैं? तो वो विटामिन्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर विल। जब टेम्परेचर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा? डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 इज ट्रिप्सिन एन एंजाइम वर्क एट। ट्रिप्सिन की जो बेस्ट पीएच है वो अल्कलाइन पीएच है। Change in environmental factors will affect enzyme activity and therefore may affect the metabolism। अगर environmental factors change होंगे तो उससे metabolism change होगा, क्योंकि metabolism totally depend on the enzymes। Question number 10 is the body temperature at 104 Fahrenheit is known as critical because it causes। ये क्यों critical है? कि इसमें जो enzyme है वो work करना stop कर देते हैं, तो enzyme stop to work और enzyme यहाँ पे denature हो जाते हैं। Other जो important MCQs are related to the chapter of enzyme are: Number 1, the model proposed by Emil Fisher is known as। तो Emil Fisher का जो मॉडल उसका नाम है लॉक एंड की मॉडल। The kind of molecule at which the enzyme act as classified है, तो जिस चीज पर एंजाइम एक्शन करते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। The model which says that specific shapes are possessed by substrate and enzyme is known as the lock and key model। इसमें जो एंजाइम की एक स्पेसिफिक शेप है उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए ही होती है, उसमें रिजिडिटी होती है, कोई यहाँ पे वो अपने आप को मॉडिफाई नहीं करता। इस मॉडल को हम लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द कैटालिटिक रीजन इन विच a small portion of molecule are involved in catalysis is। तो उस रीजन को हम एक्टिव साइट कहते हैं जो एंजाइम पर एक स्मॉल पोर्शन होता है जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को कैटालाइज करता है। The regulator of enzymatic reactions are classified as। तो enzymatic reaction के जो regulators हैं उनको हम activators या converters कहते हैं। The vibration of atoms of enzyme is increased and leads to the loss of the globular structure of the enzyme। The energy required in chemical reaction is called the activation energy। The optimum temperature of working of human enzyme is 37 degrees centigrade।
A state in which substrate molecule do not find any free active site is called saturation. क्योंकि सबस्ट्रेट ज्यादा है और एंजाइम कम है तो कोई फ्री एक्टिव साइट नहीं है तो इसको हम saturation कहते हैं. The organic cofactors that are tightly bound to the enzymes are classified as prosthetic group. जब कोफैक्टर्स जो है वो टाइटली बाउंड होगा और वो ऑर्गेनिक होगा उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. The categorization of enzyme is based on their working site. The organic cofactors that are loosely bound to the enzymes are classified as, तो जो loosely bound होगा उसको हम coenzyme कहते हैं. The biochemical reactions are also considered as energy transfer reaction. The shape of activity, sorry, the shapes of active site are determined by the specificity of enzyme. How enzymes lower the amount of activation energy includes altering shape of substrate and disrupting charge distribution. The example of inorganic cofactor is metal ions. The particular order in which several enzymes work together is classified as metabolic pathways. The example of organic cofactor is heme and flavin. ये दोनों organic cofactors हैं. The physiologist who used the term enzyme for the first time is Wilhelm Cohen का नाम है. ये बहुत important MCQs है. The pepsin enzymes that work in the stomach cavity are classified as extracellular enzymes. The biochemical reaction in which large molecules are synthesized is classified as the anabolism. जब synthesis का बात होगी उसको हम anabolism कहेंगे. The biologist who suggested the modification in lock and key model proposed by Emil Fischer is the Daniel Kosten. तो डेनियल कोस्टलैंड ने जो है ना वो मॉडिफाइड लॉक एंड की मॉडल पेश किया था जिसको हम इंड्यूस्ड मॉडल कहते हैं. Question number 23 is the enzymes that are used to remove resistant starch residues are called the amylase enzymes. In the brewing industry, enzymes break protein and starch. The trypsin enzyme work in small intestine. The enzymes that are used to remove protein strands from the cloth are called the protease enzymes. The biochemical reaction in which large molecules are broken down into smaller ones is classified as catabolism. जब large molecule को break करेंगे तो उसको हम catabolism कहते हैं. The loss of global structure of enzyme is also known as the denaturation of enzyme. The German chemist who explained the enzyme mechanism of action is Emil Fischer. Emil Fischer एक जर्मन जो है वो केमिस्ट थे जिन्होंने लॉक एंड की मॉडल पेश किया था. The heat added into activation energy provides kinetic energy to reaction. The enzymes of glycolysis that work in the cytoplasm are classified as, तो ये enzyme intracellular enzymes हैं. The high pH in which trypsin works is considered as the alkaline medium. The enzyme substrate complex is temporarily formed when the enzyme attaches with substrate. The vital vitamins that play a role as coenzymes do not include और जो ना salicylic acid जो है ना ये विटामिन ये जो है कोएंजाइम के तौर पर काम नहीं करता. The model who proposed that active site is molded in the required shape for the performing function is तो ये induced state model की statement है. The lock and key model proposed by Emil Fischer explains the specificity of enzyme क्योंकि यहाँ पे जो active site है वो अपने substrate के लिए specific होती है. The meaning of the Greek word metabolism is change. The factors that can affect the rate of action of enzyme includes all of the above. इसमें substrate concentration भी है, pH भी, temperature है, तो ये सारे rate of enzyme reaction को affect करते हैं. Question number 39 is the minimum energy required for starting reaction is called the activation energy. The usage of enzymes in breaking starch into the sugars in production of white breads is considered as a usage of the food industry. The non-protein ions or molecules required by enzymes are called the cofactors. पहले भी डिस्कस हो चुका है. Question number 42 is the major part of the metabolism which regulates metabolic pathways is classified as the enzymes. And metabolism जो totally enzymes पर depend करती है. The anabolism is related to the utilization of energy क्योंकि anabolism में energy utilize होती है और catabolism में energy synthesize जो है ना वो synthesize होती है, बनती है, release होती है.
The series of biochemical reactions that is necessary for the maintenance of life of a living organism is called the metabolism. In the paper industry, the enzyme break the starch to lower its viscosity. Option number D is correct. So much and very important motivational quotes regarding the education point of view. हर काम मुमकिन है अगर आप उसे दिल से करो. Nothing is impossible. Everything is possible अगर आपने उसे दिल से किया हो. और नाकामी से ना डरो बल्कि कोशिश ना करने से डरो. तो डू नॉट फियर फेलियर बट रादर फियर नॉट ट्राइंग. हम क्या करते हैं, हम डरते हैं कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोशिश भी नहीं करते. तो कोशिश करनी चाहिए, नाकामी से नहीं डरने चाहिए, कोशिश करना चाहिए. कोशिश करेंगे तो अल्लाह कामयाब करेंगे. और एक आयत का मफहूम है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जो जिसके लिए वो कोशिश करता है, जिसकी वो सही करता है. So much. Keep watching Biology Learning Zone for more videos on biology and related MCQs. Thank you so much.